गिरोह, एक सिंडिकेट यहाँ पर एक्टिव है और अभी भी लगातार वेपन सप्लाई किए जा रहा है। जो सूचना मिली थी उसमें था कि ये गिरोह करीब पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर एक्टिव है और काफी बड़ी मात्रा में ये वेपन सप्लाई कर रहा है इधर में, तो इस पर कार्रवाई होनी है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया और 13 मार्च को दरियागंज में दिल्ली 6 के इलाके में एक रेड की गई और उस रेड में 3 लड़के उठाए गए। इनके पोजीशन से 4 वेपन रिकवर हुए जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल थे। इसमें जो मेन लड़का जो उठाया गया था उसका नाम राहिल है। राहिल ये निहारिया मोहल्ला है एक, उसमें रहता है। इसके फादर का नाम उमर है। इसको उठाया गया। इसके पोजीशन से 4 वेपन मिले और इसके 2 कजन ब्रदर्स भी इसके साथ में थे जो इस काम में कॉम्प्लिसिट थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। जब इससे इंफॉर्मेशन, इसकी इंटरोगेशन की गई और इससे बात किया तो पता चला कि एक सोनू गुप्ता नाम का लड़का जो जौनपुर का रहने वाला है, वो अभी इनसे 5 वेपन लेकर के अभी निकला है आधा घंटा पहले। तो ये सूचना भी क्राइम ब्रांच की टीम को प्राप्त हुई। इस सूचना पर काम करते हुए सोनू गुप्ता को उसी इलाके में, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया था, उसी नजदीक इलाके में गिरफ्तार किया गया करीब 1-1.5 घंटे के अंतराल पर और उसके पोजीशन से 5 वेपन रिकवर हुए जो कि फिर से हाईली सोफिस्टिकेटेड और फॉरेन मेड वेपन थे। इनकी रिकवरी हुई, इनकी डिटेल्ड इंटरोगेशन किया, इनको कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो उसमें परस्यू किया गया। इनकी फर्दर इंटरोगेशन पर जब इन्होंने बताया कि आगे भी हमने वेपन सप्लाई किए थे, तो 17 तारीख को एक शाहदरा में घनश्याम गन्नी नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई जो दोनों तुर्की देश से आई हुई हैं। PX5 टाइप की जो वेपन है, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन है और इसको स्पेशल फोर्सेस ने इसको यूज किया है अपने ऑपरेशंस में। ये राहिल से ही वेपन लेता था और राहिल से वेपन लेने के बाद ये आगे अपने जो गैंगस्टर्स थे उनको ये सप्लाई करता था। घनश्याम और राहिल से जब आगे पूछताछ की गई तो 19 तारीख को एक रेड किया गया। ये अंबेडकर बस्ती नॉर्थ ईस्ट में, वहां से वसीम मलिक नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और उसके पोजीशन से 3 सेमी ऑटोमेटिक वेपन जो ब्रेटा मेड की है, मेड इन इटली है, ये रिकवर की गई और इससे 27 कार्ट्रिज भी इससे रिकवर किए गए। इनकी डिटेल इंटरोगेशन चलती हुई उसमें 20 तारीख को जब आगे की कार्रवाई की गई तो 20 तारीख को निशांत अरोड़ा नाम का एक बीसी है जो कि कृष्णा नगर का बीसी है, उस पर कई सारे मुकदमे हैं और आर्म सप्लाई के ही ज्यादातर उस पर मुकदमे हैं। तो निशांत अरोड़ा इलियास नोनी को उठाया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जिसमें ब्रेटा मेड की पिस्टल है ये और 11 लाइव कार्ट्रिज इससे रिकवर हुए। इसको गिरफ्तार किया गया। इन्हीं की आगे की सूचना पर उसी दिन खुर्जा में भी एक साइमल्टेनियस रेड की गई जिसमें नवाब नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया गया और उससे फिर 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई। ये पिस्टल भी ब्रेटा मेड की है जो मेड इन इटली है, इससे रिकवर हुई और 10 लाइव कार्ट्रिज इससे रिकवर हुए। 23 तारीख को अभी 2 दिन पहले जब इनसे फर्दर इंटरोगेशन हुआ तो एक मोहम्मद नोमान नाम के आदमी को अरेस्ट किया गया जो इस पूरे सिंडिकेट को, उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को संभालता था और हर एक वेपन के साथ एक मोबाइल किट एक सिम के साथ प्रोवाइड कराता था। जो वेपन का डिलीवरी फाइनल आदमी तक पहुंच जाता था तो मोबाइल फोन को भी डिस्पोज ऑफ कर देना और सिम को भी तोड़ देना था। ये सारा नेटवर्क नोमान प्रोवाइड कराता था। इसको अजमेरी गेट के इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पोजीशन से काफी सारे सिम और मोबाइल फोन रिकवर किए गए। 24 तारीख को कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जब इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो मोहम्मद नौसाद नाम के एक आदमी को सिकंदराबाद यूपी से बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई, रिकवर हुई पहले तो, जो ब्रेटा मेड की थी और इसमें 5 इससे लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए। इसको गिरफ्तार करके जब कर्सरी इससे पूछताछ की गई तो इसने कन्फेस किया कि इसके पास एक स्मॉल मशीन गन भी इसके पास है जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है और बहुत ज्यादा फायरिंग कैपेसिटी वाला वेपन है, चेक रिपब्लिक मेड है। तो इसने कन्फेस किया और बताया कि ये भी उसके पोजीशन में है, ये उसने रिकवर कराई और ये वेपन भी कल फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसको रिकवर किया। सेमी
सब मशीन गन है और ये चेक रिपब्लिक की है, बड़ी मशीन गन है। इसको रिकवर किया और इसके 15 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर किए गए। नौशाद से जब पूछताछ में पता चला तो नौशाद ने बताया कि ये इमरान और कामरान नाम के 2 युवकों के साथ काम करता है और ये नेपाल से वेपन लाते हैं। नेपाल के रास्ते में इनको कई जगह इनको हेल्प मिलती है। इनके पूरा इसने अपने जो सिंडिकेट है उसके बारे में बताया। ये भी मोटे तौर पर यदि मैं कहूँ तो मोहम्मद नौशाद और इमरान कामरान ये एक बड़े गिरोह के एक सरगना के कंड्यूट्स हैं जो नेपाल से वेपन प्रोक्योर करते हैं और आगे नेपाल से वेपन प्रोक्योर करने के बाद विभिन्न गैंग को यहाँ पर दिल्ली में ये वेपन सप्लाई करते हैं। और इसी में राहिल जो सबसे पहले जो लड़का पकड़ा था उस राहिल को भी सप्लाई मोहम्मद नौशाद ने किया था। नौशाद की अभी इंटरोगेशन चल रही है तो इसने बताया कि नौशाद की जो हेल्प करता है मेन वो शहबाज अंसारी नाम का एक आदमी है, एक क्रिमिनल है जो कि 2022 में एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया था आर्म्स ट्रैफिकिंग के केस में ही। ये जो सिद्धू मूसेवाला एक प्रोमिनेंट सिंगर थे पंजाब में, उसके मर्डर केस में जो वेपन सप्लाई किया था उस केस में शहबाज अंसारी को एनआईए ने भी गिरफ्तार किया था और ये खुर्जा का रहने वाला है। 2025 में ये बेल आउट हुआ है और बेल आउट होने के बाद इसकी अभी करंट लोकेशन जो है वो अपने पड़ोसी देश में एक जगह बताई गई है जिस पर अभी सुरक्षा एजेंसी भी काम कर रही है और इसकी गिरफ्तारी के लिए भी काफी कोशिश की जा रही है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। शहबाज अंसारी 2025 से है बाहर है अपने देश से अभी और इसका अपने चाचा के साथ जिसका नाम राहिल अंसारी है उसके साथ ये रेहान अंसारी है उसके साथ ये अब्सकॉन्ड किए हुए हैं। इस पर अभी आगे की तफ्तीश है। इस पूरे सिंडिकेट में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 21 वेपन इनसे रिकवर हो गए हैं टोटल। इसमें एक सब मशीन गन है, ये चेक रिपब्लिक मेड है। 20 पिस्टल इनसे सोफिस्टिकेटेड पिस्टल रिकवर हुई है जिसमें ब्रेटा इटली की मैन्युफैक्चर है, टोरस है ब्राजील की मेड है, PX 5.7 है टर्किश मेड है और PX 3 है जो चाइना मेड है। विभिन्न प्रकार की इनसे पिस्टल रिकवर हुई हैं। अभी तक 200 के आसपास लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए हैं और 10 मोबाइल फोन इनसे अभी तक रिकवर हो गए हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें अभी आगे की गिरफ्तारी और होनी है, काम इसमें पेंडिंग है जिस पर काम क्राइम ब्रांच की टीम आगे काम करेगी। इसमें देखिए अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन आई है इसमें इतना मैं जरूर कहूँगा कि कुछ आईपी हैं जो एक्टिव हुई हैं और जो पाकिस्तान में कनेक्टेड हैं। इस पर आगे की कार्रवाई अभी चल रही है, आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें। और इसमें जो शहबाज अंसारी है और इस अपने चाचा के साथ जो बाहर बैठा हुआ है ये भी बाहर किसी मुल्क में बैठा हुआ है जिस पर अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। जो वेपन है वो नेपाल के रास्ते इन्होंने रूट किया। अभी तक जितने भी वेपन आए हैं ज्यादातर वेपन नेपाल के रास्ते ये लेकर के आते हैं, बाहर से सप्लाई आती है। और बाहर से जो अभी तक पता चला है तो ये पार्ट्स में लेकर के आते हैं, कोई एक सिंगल वेपन ऐसे नहीं आता, पार्ट्स में लेकर के आते हैं। और इनकी जो असेंबली होती है वो असेंबली नेपाल में होती है, फिर नेपाल के रास्ते ये इंडिया में इसको स्मगल करते हैं। तो इस पर अभी आगे भी काम चल रहा है, तो इस पर जो जानकारी आएगी शेयर अभी तफ्तीश चल रही है, इस पर अभी नहीं बोल पाएंगे आगे। Just to maintain the sanctity of the operation so that the information doesn't get revealed to other persons. यदि किसी एक आदमी को टारगेट करके एक वेपन की सप्लाई करना है, that ends then and there. दूसरे आदमी को दूसरे वेपन से दूसरे सप्लाई करना है तो मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द ट्रांजैक्शन दे आर यूजिंग डिफरेंट सिम एंड डिफरेंट हैंडसेट्स। That is we are working on it and that is part of investigation. Yes. अभी तक की जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें शहबाज अंसारी इसमें मेन किंग पिन बताया गया है और ये आदमी कई सालों से पहले भी ये एक्टिव था, आर्म्स स्मगलिंग में ही ये रहा है। और जो 2022 का जो केस था जिसमें एनआईए ने इसको इन्वेस्टिगेट किया था, सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर केस था,
उसमें इसके आर्म्स प्रोवाइड कराने वाली भूमिका में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये एक नॉन आर्म्स स्मगलर है जो एक, जैसे मैंने पहले भी बताया, शिवा नाम का एक और लड़का जौनपुर का है और राहिल को यहाँ पर प्रोमिनेंटली इन दो लोगों को सप्लाई करता है और ये अभी बाहर बैठा हुआ है, बाहर से अपने पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हैं और इसमें जो हमारे हॉस्टाइल कंट्रीज हैं उनकी खुफिया एजेंसी का रोल भी सामने आ रहा है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में। आगे इस पे काम चल रहा है, इसको आगे तफ्तीश में आगे बताया जाएगा। अभी तक की इंफॉर्मेशन में ये बात सामने आई है कि इन्होंने लॉरेंस गैंग को भी सप्लाई की है। सर, जो निशांत लोनी है, बताया जा रहा है कि वो हथियार लेके कई गैंगस्टरों को बेचता था, प्रोवाइड करवाता था और उससे तो पहले भी मतलब कई बदले चल रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो निशांत लोनी है वो सीधा लॉरेंस गैंग के साथ संपर्क कर रहा है। ये आपने जो बताया ये बात सही है और इस पर पुलिस भी काम कर रही है और अभी बहुत सारे और ऐसे ही इससे कनेक्टेड और भी लड़के हैं जिनकी हम सर्च कर रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं। इसमें करीब 7-8 ऐसे आदमी और अभी शिनाख्त हो गई है, जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, जिनकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है और भी रिकवरी इसमें संभावित है, लेकिन ज्यादा उस पर अभी नहीं बोल पाएंगे। इसकी जो करंट लोकेशन है वो लोकेशन अभी मिली है, बांग्लादेश में भी मिली है, जिस पर अभी काम कर रही है, जिसमें सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से काम करेंगे आगे। हाँ। मार्च के फर्स्ट वीक में डीसीपी संजीव यादव की क्राइम ब्रांच की टीम को एक सूचना मिली थी कि दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में एक आर्म्स सप्लाई का एक गिरोह, एक सिंडिकेट यहाँ पर एक्टिव है और अभी भी लगातार वेपन सप्लाई किए जा रहा है। जो सूचना मिली थी उसमें था कि ये गिरोह करीब पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर एक्टिव है और काफी बड़ी मात्रा में ये वेपन सप्लाई कर रहा है इधर में। यही होनी है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया और 13 मार्च को दरियागंज में दिल्ली 6 के इलाके में एक रेड की गई और उस रेड में 3 लड़के उठाए गए। इनके पोजीशन से 4 वेपन रिकवर हुए जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल थे। इसमें जो मेन लड़का जो उठाया गया था उसका नाम राहिल है। राहिल ये निहारिया मोहल्ला है एक, उसमें रहता है। इसके फादर का नाम उमर है। इसको उठाया गया। इसके पोजीशन से 4 वेपन मिले और इसके 2 कजन ब्रदर्स भी इसके साथ में थे जो इस काम में कॉम्प्लिसिट थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। जब इससे इंफॉर्मेशन, इसकी इंटरोगेशन की गई और इससे बात किया तो पता चला कि एक सोनू गुप्ता नाम का लड़का जो जौनपुर का रहने वाला है, वो अभी इनसे 5 वेपन लेकर के अभी निकला है आधा घंटा पहले। तो ये सूचना भी क्राइम ब्रांच की टीम को प्राप्त हुई। इस सूचना पर काम करते हुए सोनू गुप्ता को उसी इलाके में, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया था, उसी नजदीक इलाके में गिरफ्तार किया गया करीब 1-1.5 घंटे के अंतराल पर और उसके पोजीशन से 5 वेपन रिकवर हुए जो कि फिर से हाईली सोफिस्टिकेटेड और फॉरेन मेड वेपन थे। इनकी रिकवरी हुई, इनकी डिटेल्ड इंटरोगेशन किया, इनको कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो उसमें परस्यू किया गया। इनकी फर्दर इंटरोगेशन पर जब इन्होंने बताया कि आगे भी हमने वेपन सप्लाई किए थे, तो 17 तारीख को एक शाहदरा में घनश्याम गन्नी नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई जो दोनों तुर्की देश से आई हुई हैं। PX-5 टाइप की जो वेपन है, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन है और इसको स्पेशल फोर्सेस ने इसको यूज किया है अपने ऑपरेशंस में। ये राहिल से ही वेपन लेता था और राहिल से वेपन लेने के बाद ये आगे अपने जो गैंगस्टर्स थे उनको ये सप्लाई करता था। घनश्याम और राहिल से जब आगे पूछताछ की गई तो 19 तारीख को एक रेड किया गया। ये अंबेडकर बस्ती नॉर्थ ईस्ट में, वहां से वसीम मलिक नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और उसके पोजीशन से 3 सेमी ऑटोमेटिक वेपन जो ब्रेटा मेड की है, मेड इन इटली है, ये रिकवर की गई और इससे 27 कार्ट्रिज भी इससे रिकवर किए गए। इनकी डिटेल्ड इंटरोगेशन चलती हुई, उसमें 20 तारीख को
जब आगे की कार्रवाई की गई तो 20 तारीख को निशांत अरोड़ा नाम का एक बीसी है जो कि कृष्णा नगर का बीसी है, उस पर कई सारे मुकदमे हैं और आर्म सप्लाई के ही ज्यादातर उस पर मुकदमे हैं। तो निशांत अरोड़ा इलियास नोनी को उठाया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जिसमें ब्रेटा मेड की पिस्टल है ये और 11 लाइव कार्ट्रिज इससे रिकवर हुए। इसको गिरफ्तार किया गया। इन्हीं की आगे की सूचना पर उसी दिन खुर्जा में भी एक साइमल्टेनियस रेड की गई जिसमें नवाब नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया गया और उससे फिर 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई। ये पिस्टल भी ब्रेटा मेड की है जो मेड इन इटली है, इससे रिकवर हुई और 10 लाइव कार्ट्रिज इससे रिकवर हुए। 23 तारीख को अभी 2 दिन पहले जब इनसे फर्दर इंटरोगेशन हुआ तो एक मोहम्मद नोमान नाम के आदमी को अरेस्ट किया गया जो इस पूरे सिंडिकेट को उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को संभालता था और हर एक वेपन के साथ एक मोबाइल किट एक सिम के साथ प्रोवाइड कराता था। जब वेपन का डिलीवरी फाइनल आदमी तक पहुंच जाता था तो मोबाइल फोन को भी डिस्पोज ऑफ कर देना और उस सिम को भी तोड़ देना था। ये सारा नेटवर्क नोमान प्रोवाइड कराता था। इसको अजमेरी गेट के इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पोजीशन से काफी सारे सिम और मोबाइल फोन रिकवर किए गए। 24 तारीख को कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जब इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो मोहम्मद नौसाद नाम के एक आदमी को सिकंदराबाद यूपी से बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई, रिकवर हुई पहले तो जो ब्रेटा मेड की थी और इसमें 5 इससे लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए। इसको गिरफ्तार करके जब कर्सरी इससे पूछताछ की गई तो इसने कन्फेस किया कि इसके पास एक स्मॉल मशीन गन भी इसके पास है जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है और बहुत ज्यादा फायरिंग कैपेसिटी वाला वेपन है, चेक रिपब्लिक मेड है। तो इसने कन्फेस किया और बताया कि ये भी उसके पोजीशन में है, ये उसने रिकवर कराई और ये वेपन भी कल फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसको रिकवर किया। सब मशीन गन है और ये चेक रिपब्लिक की है, बड़ी मशीन गन है, इसको रिकवर किया और इसके 15 लाइव कार्ट्रिज भी इसे रिकवर किए गए। नौसाद से जब पूछताछ में पता चला तो नौसाद ने बताया कि ये इमरान और कामरान नाम के 2 युवकों के साथ काम करता है और ये नेपाल से वेपन लाते हैं। नेपाल के रास्ते में इनको कई जगह इनको हेल्प मिलती है। इनके पूरा इसने अपने जो सिंडिकेट है उसके बारे में बताया। ये भी मोटे तौर पर यदि मैं कहूँ तो मोहम्मद नौसाद और इमरान कामरान ये एक बड़े गिरोह के एक सरगना के कंड्यूट्स हैं जो नेपाल से वेपन प्रोक्योर करते हैं और आगे नेपाल से वेपन प्रोक्योर करने के बाद विभिन्न गैंग को यहाँ पर दिल्ली में प्रोवाइड कर ये वेपन सप्लाई करते हैं और इसी में राहिल जो सबसे पहले जो लड़का पकड़ा था उस राहिल को भी सप्लाई मोहम्मद नौसाद ने किया था। नौसाद की अभी इंटरोगेशन चल रही है तो इसने बताया कि नौसाद की जो हेल्प करता है मेन वो शहबाज अंसारी नाम का एक आदमी है, एक क्रिमिनल है जो कि 2022 में एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया था आर्म्स ट्रैफिकिंग के केस में ही। ये जो सिद्धू मूसेवाला एक प्रोमिनेंट सिंगर थे पंजाब में, उसके मर्डर केस में जो वेपन सप्लाई किया था उस केस में शहबाज अंसारी को एनआईए ने भी गिरफ्तार किया था और ये खुर्जा का रहने वाला है। 2025 में ये बेल आउट हुआ है और बेल आउट होने के बाद इसकी अभी करंट लोकेशन जो है वो अपने पड़ोसी देश में एक जगह बताई गई है जिस पर अभी सुरक्षा एजेंसी भी काम कर रही है और इसकी गिरफ्तारी के लिए भी काफी कोशिश की जा रही है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। शहबाज अंसारी 2025 से है बाहर है अपने देश से अभी और इसका अपने चाचा के साथ जिसका नाम राहिल अंसारी है उसके साथ ये रेहान अंसारी है उसके साथ ये अटस्कोन किए हुए हैं। इस पर अभी आगे की तफ्तीश है। इस पूरे सिंडिकेट में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 21 वेपन इनसे रिकवर हो गए हैं टोटल। इसमें एक सब मशीन गन है, ये चेक रिपब्लिक मेड है। 20 पिस्टल इनसे सोफिस्टिकेटेड पिस्टल रिकवर हुई है जिसमें ब्रेटा इटली की मैन्युफैक्चर है, टोरस है ब्राजील की मेड है, PX 5.7 है टर्किश मेड है और PX 3 है जो चाइना मेड है। विभिन्न प्रकार की इनसे पिस्टल रिकवर हुई हैं अभी तक। 200 के आसपास लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए हैं और 10 मोबाइल फोन इनसे अभी तक रिकवर हो गए हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें अभी आगे की गिरफ्तारी और होनी है, काम इसमें पेंडिंग है जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम आगे काम करेगी।
इसमें देखिए अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन आई है इसमें इतना मैं जरूर कहूंगा कि कुछ आईपी हैं जो एक्टिव हुई हैं और जो पाकिस्तान में कनेक्टेड हैं। इस पर आगे की कार्रवाई अभी चल रही है, आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें। और इसमें जो शहबाज अंसारी है और इस अपने चाचा के साथ जो बाहर बैठा हुआ है, ये भी बाहर किसी मुल्क में बैठा हुआ है, जिस पर अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। जो वेपन है वो नेपाल के रास्ते इन्होंने रूट किए अभी तक, जितने भी वेपन आए हैं ज्यादातर वेपन नेपाल के रास्ते ये लेकर के आते हैं, बाहर से सप्लाई आती है। और बाहर से जो अभी तक पता चला है तो ये पार्ट्स में लेकर के आते हैं, कोई एक सिंगल वेपन ऐसे नहीं आता, पार्ट्स में लेकर के आते हैं। और इनकी जो असेंबली होती है वो असेंबली नेपाल में होती है, फिर नेपाल के रास्ते ये इंडिया में इसको स्मगल करते हैं। तो इस पर अभी आगे भी काम चल रहा है, तो इस पर जो जानकारी आएगी शेयर अभी तफ्तीश चल रही है, इस पर अभी नहीं बोल पाएंगे आगे। Just to maintain the sanctity of the operation so that the information doesn't get revealed to other persons. यदि किसी एक आदमी को टारगेट करके एक वेपन की सप्लाई करना है, that ends then and there. दूसरे आदमी को दूसरे वेपन से दूसरे सप्लाई करना है, तो मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द ट्रांजैक्शन दे आर यूजिंग डिफरेंट सिम एंड डिफरेंट हैंडसेट्स। दैट इज वी आर वर्किंग ऑन इट, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यस, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें शहबाज अंसारी इसमें मेन किंग पिन बताया गया है। और ये आदमी कई सालों से पहले भी ये एक्टिव था, आर्म्स स्मगलिंग में ही ये रहा है। और जो 2022 का जो केस था जिसमें एनआईए ने इसको इन्वेस्टिगेट किया था, सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर केस था, उसमें इसके आर्म्स प्रोवाइड कराने वाली भूमिका में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये एक नॉन आर्म स्मगलर है जो एक, जैसे मैंने पहले भी बताया, शिवा नाम का एक और लड़का जौनपुर का है, और राहिल को यहाँ पर प्रोमिनेंटली इन दो लोगों को सप्लाई करता है। और ये अभी बाहर बैठा हुआ है, बाहर से अपने पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे हॉस्टाइल कंट्रीज हैं उनकी खुफिया एजेंसी का रोल भी सामने आ रहा है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में। आगे इसमें काम चल रहा है, इसको आगे तफ्तीश में आगे बताया जाएगा। अभी तक की इंफॉर्मेशन में ये बात सामने आई है कि इन्होंने लॉरेंस गैंग के को भी सप्लाई की है। सर, जो देशांत लोनी है, बताया जा रहा है कि वो हथियार लेके कई कैंपसों को देता था, प्रोवाइड करवाता था, और उससे कब पहले भी कहीं बदली कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो देशांत लोग हैं वो सीधा लॉरेंस गैंग के साथ संपर्क करेंगे। ये आपने जो बताया ये बात सही है, और इस पर पुलिस भी काम कर रही है। और अभी बहुत सारे और ऐसे ही इससे कनेक्टेड और भी लड़के हैं जिनकी हम सर्च कर रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं। इसमें करीब 7-8 ऐसे आदमी और अभी शिनाख्त हो गई है, जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, जिनकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है, और भी रिकवरी इसमें संभावित है, लेकिन ज्यादा उस पर अभी नहीं बोल पाएंगे। इसकी जो करंट लोकेशन है वो लोकेशन अभी मिली है, बांग्लादेश में भी मिली है, जिस पर अभी काम कर रही है, जिसमें सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से काम करेंगे आगे। हाँ। मार्च के फर्स्ट वीक में डीसीपी संजीव यादव की क्राइम ब्रांच की टीम को एक सूचना मिली थी कि दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में एक आर्म्स सप्लाई का एक गिरोह, एक सिंडिकेट यहाँ पर एक्टिव है, और अभी भी लगातार वेपन सप्लाई किए जा रहा है। जो सूचना मिली थी उसमें था कि ये गिरोह करीब पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर एक्टिव है, और काफी बड़ी मात्रा में ये वेपन सप्लाई कर रहा है इधर में, तो इस पर कार्रवाई होनी है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया, और 13 मार्च को दरियागंज में दिल्ली 6 के इलाके में एक रेड की गई, और उस रेड में 3 लड़के उठाए गए। इनके पोजीशन से 4 वेपन रिकवर हुए, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल थे। इसमें जो मेन लड़का जो उठाया गया था उसका नाम राहिल है। राहिल ये निहारिया मोहल्ला है एक, उसमें रहता है। इसके फादर का नाम उमर है। इसको उठाया गया, इसके पोजीशन से 4 वेपन मिले, और इसके 2 कजन ब्रदर्स भी इसके साथ में थे जो इस काम में कॉम्प्लिसिट थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया।
जब इससे इंफॉर्मेशन, इसकी इंटरोगेशन की गई और इससे बात किया तो पता चला कि एक सोनू गुप्ता नाम का लड़का जो जौनपुर का रहने वाला है, वो अभी अभी इनसे 5 वेपन लेकर के अभी निकला है आधा घंटा पहले। तो ये सूचना भी क्राइम ब्रांच की टीम को प्राप्त हुई। इस सूचना पर काम करते हुए सोनू गुप्ता को उसी इलाके में, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया था, उसी नजदीक इलाके में गिरफ्तार किया गया करीब 1-1.5 घंटे के अंतराल पर। और उसके पोजीशन से 5 वेपन रिकवर हुए जो कि फिर से हाईली सोफिस्टिकेटेड और फॉरेन मेड वेपन थे। इनकी रिकवरी हुई, इनकी डिटेल्ड इंटरोगेशन किया, इनको कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो उसमें परस्यू किया गया। इनकी फर्दर इंटरोगेशन पर जब इन्होंने बताया कि आगे भी हमने वेपन सप्लाई किए थे, तो 17 तारीख को एक शाहदरा में घनश्याम गन्नी नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई, जो दोनों तुर्की देश से आई हुई हैं। PX5 टाइप की जो वेपन है, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन है और इसको स्पेशल फोर्सेज ने इसको यूज किया है अपने ऑपरेशंस में। ये राहिल से ही वेपन लेता था और राहिल से वेपन लेने के बाद ये आगे अपने जो गैंगस्टर्स थे उनको ये सप्लाई करता था। घनश्याम और राहिल से जब आगे पूछताछ की गई तो 19 तारीख को एक रेड किया गया। ये अंबेडकर बस्ती नॉर्थ ईस्ट में, वहां से वसीम मलिक नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और उसके पोजीशन से 3 सेमी ऑटोमेटिक वेपन जो ब्रेटा मेड की है, मेड इन इटली है, ये रिकवर की गई और इससे 27 कार्ट्रिज भी इससे रिकवर किए गए। इनकी डिटेल्ड इंटरोगेशन चलती हुई, उसमें 20 तारीख को जब आगे की कार्रवाई की गई तो 20 तारीख को निशांत अरोड़ा नाम का एक बीसी है जो कि कृष्णा नगर का बीसी है, उस पर कई सारे मुकदमे हैं और आम सप्लाई के ही ज्यादातर उस पर मुकदमे हैं। तो निशांत अरोड़ा इलियास नोनी को उठाया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जिसमें ब्रेटा मेड की पिस्टल है ये और 11 लाइव कार्ट्रिज इससे रिकवर हुए। इसको गिरफ्तार किया गया। इन्हीं की आगे की सूचना पर उसी दिन खुर्जा में भी एक साइमल्टेनियस रेड की गई जिसमें नवाब नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया गया और उससे फिर 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई। ये पिस्टल भी ब्रेटा मेड की है जो मेड इन इटली है, इससे रिकवर हुई और 10 लाइव कार्ट्रिज इससे रिकवर हुए। 23 तारीख को अभी 2 दिन पहले जब इनसे फर्दर इंटरोगेशन हुआ तो एक मोहम्मद नोमान नाम के आदमी को अरेस्ट किया गया जो इस पूरे सिंडिकेट को, उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को संभालता था और हर एक वेपन के साथ एक मोबाइल किट एक सिम के साथ प्रोवाइड कराता था। जब वेपन का डिलीवरी फाइनल आदमी तक पहुंच जाता था तो मोबाइल फोन को भी डिस्पोज ऑफ कर देना और उस सिम को भी तोड़ देना था। ये सारा नेटवर्क नोमान प्रोवाइड कराता था। इसको अजमेरी गेट के इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पोजीशन से काफी सारे सिम और मोबाइल फोन रिकवर किए गए। 24 तारीख को कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जब इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो मोहम्मद नौसाद नाम के एक आदमी को सिकंदराबाद यूपी से बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई, रिकवर हुई पहले तो, जो ब्रेटा मेड की थी और इसमें 5 इससे लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए। इसको गिरफ्तार करके जब कर्सरी इससे पूछताछ की गई तो इसने कन्फेस किया कि इसके पास एक स्मॉल मशीन गन भी इसके पास है जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है और बहुत ज्यादा फायरिंग कैपेसिटी वाला वेपन है, चेक रिपब्लिक मेड है। तो इसने कन्फेस किया और बताया कि ये भी उसके पोजीशन में है, ये उसने रिकवर कराई और ये वेपन भी कल फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसको रिकवर किया। सब मशीन गन है और ये चेक रिपब्लिक की है, बड़ी मशीन गन है, इसको रिकवर किया और इसके 15 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर किए गए। नौसाद से जब पूछताछ में पता चला तो नौसाद ने बताया कि ये इमरान और कामरान नाम के 2 युवकों के साथ काम करता है और ये नेपाल से वेपन लाते हैं। नेपाल के रास्ते में इनको कई जगह इनको हेल्प मिलती है, इनके पूरा इसने अपने जो सिंडिकेट है उसके बारे में बताया। ये भी मोटे तौर पर यदि मैं कहूँ तो मोहम्मद नौसाद और इमरान कामरान ये एक बड़े गिरोह के एक सरगना के कंड्यूट्स हैं जो नेपाल से वेपन प्रोक्योर करते हैं और आगे नेपाल से वेपन प्रोक्योर करने के बाद विभिन्न गैंग को यहाँ पर दिल्ली में ये वेपन सप्लाई करते हैं और इसी में राहिल जो सबसे पहले जो लड़का पकड़ा था उस राहिल को भी सप्लाई मोहम्मद नौसाद ने किया था।
मोसाद की अभी इंटरोगेशन चल रही है, तो इसने बताया कि मोसाद की जो हेल्प करता है मेन, वो शहबाज अंसारी नाम का एक आदमी है, एक क्रिमिनल है, जो कि 2022 में एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया था आर्म्स ट्रैफिकिंग के केस में ही। ये जो सिद्धू मूसेवाला एक प्रोमिनेंट सिंगर थे पंजाब में, उसके मर्डर केस में जो वेपन सप्लाई किया था, उस केस में शहबाज अंसारी को एनआईए ने भी गिरफ्तार किया था, और ये खुर्जा का रहने वाला है। 2025 में ये बेल आउट हुआ है, और बेल आउट होने के बाद इसकी अभी करंट लोकेशन जो है वो अपने पड़ोसी देश में एक जगह बताई गई है, जिस पर अभी सुरक्षा एजेंसी भी काम कर रही है, और इसकी गिरफ्तारी के लिए भी काफी कोशिश की जा रही है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। शहबाज अंसारी 2025 से है बाहर है अपने देश से अभी, और इसका अपने चाचा के साथ, जिसका नाम राहिल अंसारी है, उसके साथ ये रेहान अंसारी है, उसके साथ ये अटस्कोन किए हुए हैं। इस पर अभी आगे की तफ्तीश है। इस पूरे सिंडिकेट में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और 21 वेपन इनसे रिकवर हो गए हैं टोटल। इसमें एक सब मशीन गन है, ये चेक रिपब्लिक मेड है। 20 पिस्टल, इनसे सोफिस्टिकेटेड पिस्टल रिकवर हुई है, जिसमें ब्रेटा इटली की मैन्युफैक्चर है, टोरस है ब्राजील की मेड है, PX 5.7 है टर्किश मेड है, और PX 3 है जो चाइना मेड है। विभिन्न प्रकार की इनसे पिस्टल रिकवर हुई हैं अभी तक। 200 के आसपास लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए हैं, और 10 मोबाइल फोन इनसे अभी तक रिकवर हो गए हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें अभी आगे की गिरफ्तारी और होनी है, काम इसमें करनी है, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम आगे काम करेगी। इसमें देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन आई है, इसमें इतना मैं जरूर कहूंगा कि कुछ आईपी हैं जो एक्टिव हुई हैं और जो पाकिस्तान में कनेक्टेड हैं। इस पर आगे की कार्रवाई अभी चल रही है, आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें। और इसमें जो शहबाज अंसारी है और इस अपने चाचा के साथ जो बाहर बैठा हुआ है, ये भी बाहर किसी मुल्क में बैठा हुआ है, जिस पर अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। जो वेपन है वो नेपाल के रास्ते इन्होंने रूट किया। अभी तक जितने भी वेपन आए हैं, ज्यादातर वेपन नेपाल के रास्ते ये लेकर के आते हैं, बाहर से सप्लाई आती है। और बाहर से जो अभी तक पता चला है, तो ये पार्ट्स में लेकर के आते हैं, कोई एक सिंगल वेपन ऐसे नहीं आता, पार्ट्स में लेकर के आते हैं। और इनकी जो असेंबली होती है वो असेंबली नेपाल में होती है, फिर नेपाल के रास्ते ये इंडिया में इसको स्मगल करते हैं। तो इस पर अभी आगे भी काम चल रहा है, तो इस पर जो जानकारी आएगी शेयर की। अभी तफ्तीश चल रही है, इस पर अभी नहीं बोल पाएंगे आगे। Just to maintain the sanctity of the operation, so that the information doesn't get revealed to other persons. यदि किसी एक आदमी को टारगेट करके एक वेपन की सप्लाई करना है, that ends then and there. दूसरे आदमी को दूसरे वेपन से दूसरे सप्लाई करना है, तो मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द ट्रांजैक्शन दे आर यूजिंग डिफरेंट सिम एंड डिफरेंट हैंडसेट्स। दैट इज वी आर वर्किंग ऑन इट, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यस, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें शहबाज अंसारी इसमें मेन किंग पिन बताया गया है, और ये आदमी कई सालों से पहले भी ये एक्टिव था, आर्म्स स्मगलिंग में ही ये रहा है। और जो 2022 का जो केस था जिसमें एनआईए ने इसको इन्वेस्टिगेट किया था, सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर केस था, उसमें इसके आर्म्स प्रोवाइड कराने वाली भूमिका में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये एक नॉन आर्म्स स्मगलर है, जो एक जैसे मैंने पहले भी बताया, शिवा नाम का एक और लड़का जौनपुर का है, और राहिल को यहाँ पर प्रोमिनेंटली इन 2 लोगों को सप्लाई करता है। और ये अभी बाहर बैठा हुआ है, बाहर से अपने पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे हॉस्टाइल कंट्रीज हैं उनकी खुफिया एजेंसी का रोल भी सामने आ रहा है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में। आगे इसमें काम चल रहा है, इसको आगे तफ्तीश में आगे बताया जाएगा। अभी तक की इंफॉर्मेशन में ये बात सामने आई है कि इन्होंने लॉरेंस गैंग के को भी सप्लाई की है। सर, जो देशांत लोग हैं, बताया जाता है कि वो हथियार लेके कहीं गैंगस्टरों को देता था, प्रोवाइड करवाता था, और उससे तो पहले भी मतलब कहीं वर्किंग कर रहे हैं। तो ये भी बताया जाता है कि जो देशांत लोग हैं वो सीधा लॉरेंस गैंग के साथ संपर्क करते हैं।
ये आपने जो बताया ये बात सही है और इस पर पुलिस भी काम कर रही है और अभी बहुत सारे और ऐसे ही इससे कनेक्टेड और भी लड़के हैं जिनकी हम सर्च कर रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं। इसमें करीब 7-8 ऐसे आदमी और अभी शिनाख्त हो गई है, जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, जिनकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है और भी रिकवरी इसमें संभावित है, लेकिन ज्यादा उस पर अभी नहीं बोल पाएंगे। इसकी जो करंट लोकेशन है वो लोकेशन अभी मिली है, बांग्लादेश में भी मिली है, जिस पर अभी काम कर रही है, जिसमें सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से काम करेंगे आगे। हाँ। मार्च के फर्स्ट वीक में डीसीपी संजीव यादव की क्राइम ब्रांच की टीम को एक सूचना मिली थी कि दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में एक आर्म्स सप्लाई का एक गिरोह, एक सिंडिकेट यहाँ पर एक्टिव है और अभी भी लगातार वेपन सप्लाई किए जा रहा है। जो सूचना मिली थी उसमें था कि ये गिरोह करीब पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर एक्टिव है और काफी बड़ी मात्रा में ये वेपन सप्लाई कर रहा है इधर में, तो इस पर कार्रवाई होनी है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया और 13 मार्च को दरियागंज में दिल्ली 6 के इलाके में एक रेड की गई और उस रेड में 3 लड़के उठाए गए। इनके पोजीशन से 4 वेपन रिकवर हुए जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल थे। इसमें जो मेन लड़का जो उठाया गया था उसका नाम राहिल है। राहिल ये निहारिया मोहल्ला है एक, उसमें रहता है। इसके फादर का नाम उमर है। इसको उठाया गया। इसके पोजीशन से 4 वेपन मिले और इसके 2 कजन ब्रदर्स भी इसके साथ में थे जो इस काम में कॉम्प्लिसिट थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। जब इससे इंफॉर्मेशन, इसकी इंटरोगेशन की गई और इससे बात किया तो पता चला कि एक सोनू गुप्ता नाम का लड़का जो जौनपुर का रहने वाला है, वो बड़े दिनों बाद आना हुआ। बस थोड़ा बिजी हो गया था, इसीलिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। खैर छोड़िए, आप बताइए कैसे हैं? रिटायरमेंट के बाद कैसी चल रही है लाइफ? चिल्ड आउट? अरे कहाँ, मुझे तो फिक्र हो गई। क्यों? ये ग्रेचुइटी के पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अंकल, आप ग्रेचुइटी के पैसे फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ समझा नहीं। अंकल, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इन पे रेगुलर इनकम मिलती ही रहती है और साथ ही में ओवर टाइम कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आदमी को गिरफ्तार किया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई जो दोनों तुर्की देश से आई हुई हैं। PX5 टाइप के जो वेपन है, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन है और इसको स्पेशल फोर्सेस ने इसको यूज किया है अपने ऑपरेशंस में। ये राहिल से ही वेपन लेता था और राहिल से वेपन लेने के बाद ये आगे अपने जो गैंगस्टर्स थे उनको ये सप्लाई करता था। घनश्याम और राहिल से जब आगे पूछताछ की गई तो 19 तारीख को एक रेड किया गया। ये अंबेडकर बस्ती नॉर्थ ईस्ट में, वहां से वसीम मलिक नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और उसके पोजीशन से 3 सेमी ऑटोमेटिक वेपन जो ब्रेटा मेड की है, मेड इन इटली है, ये रिकवर की गई और इससे 27 कार्ट्रिज भी इससे रिकवर किए गए। इनकी डिटेल इंटरोगेशन चलती हुई, उसमें 20 तारीख को जब आगे की कार्रवाई की गई तो 20 तारीख को निशांत अरोड़ा नाम का एक बीसी है जो कि कृष्णा नगर का बीसी है, उस पर कई सारे मुकदमे हैं और आम सप्लाई के ही ज्यादातर उस पर मुकदमे हैं। तो निशांत अरोड़ा इलियास नोनी को उठाया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जिसमें ब्रेटा मेड की पिस्टल है ये और 11 लाइव कार्ट्रिज इससे रिकवर हुए। इसको गिरफ्तार किया गया। इन्हीं की आगे की सूचना पर उसी दिन खुर्जा में भी एक साइमल्टेनियस रेड की गई जिसमें नवाब नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया गया और उससे फिर 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई। ये पिस्टल भी ब्रेटा मेड की है जो मेड इन इटली है, इससे रिकवर हुई और 10 लाइव कार्ट्रिज इससे रिकवर हुए। 23 तारीख को अभी 2 दिन पहले
जब इनसे फर्दर इंटरोगेशन हुआ तो एक मोहम्मद नोमान नाम के आदमी को अरेस्ट किया गया, जो इस पूरे सिंडिकेट को, उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को संभालता था और हर एक वेपन के साथ एक मोबाइल किट एक सिम के साथ प्रोवाइड कराता था। जब वेपन का डिलीवरी फाइनल आदमी तक पहुंच जाता था तो मोबाइल फोन को भी डिस्पोज ऑफ कर देना और सिम को भी तोड़ देना था। ये सारा नेटवर्क नोमान प्रोवाइड कराता था। इसको अजमेरी गेट के इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पोजीशन से काफी सारे सिम और मोबाइल फोन रिकवर किए गए। 24 तारीख को कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जब इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो मोहम्मद नौसाद नाम के एक आदमी को सिकंदराबाद यूपी से बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई, रिकवर हुई पहले तो, जो रिकवर हुए। इसको गिरफ्तार करके जब कर्सरी इससे पूछताछ की गई तो इसने कन्फेस किया कि इसके पास एक स्मॉल मशीन गन भी इसके पास है, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है और बहुत ज्यादा फायरिंग कैपेसिटी वाला वेपन है, चेक रिपब्लिक मेड है। तो इसने कन्फेस किया और बताया कि ये भी उसके पोजीशन में है, ये उसने रिकवर कराई और ये वेपन भी कल फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसको रिकवर किया। सब मशीन गन है और ये चेक रिपब्लिक की है, बड़ी मशीन गन है, इसको रिकवर किया और इसके 15 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर किए गए। नौसाद से जब पूछताछ में पता चला तो नौसाद ने बताया कि ये इमरान और कामरान नाम के 2 युवकों के साथ काम करता है और ये नेपाल से वेपन लाते हैं। नेपाल के रास्ते में इनको कई जगह इनको हेल्प मिलती है। इनके पूरा इसने अपने जो सिंडिकेट है उसके बारे में बताया। ये भी मोटे तौर पर यदि मैं कहूँ तो मोहम्मद नौसाद और इमरान कामरान ये एक बड़े गिरोह के एक सरगना के कंड्यूट्स हैं जो नेपाल से वेपन प्रोक्योर करते हैं और आगे नेपाल से वेपन प्रोक्योर करने के बाद विभिन्न गैंग को यहाँ पर दिल्ली में ये वेपन सप्लाई करते हैं। और इसी में राहिल, जो सबसे पहले जो लड़का पकड़ा था, उस राहिल को भी सप्लाई मोहम्मद। मुझे काफी चिंता रहती थी अपने शुगर लेवल्स की। मेरी दादी रोज इंसुलिन लेती थी, कभी यहाँ कभी वहां। फिर पापा को शुगर हुआ, फिर मेरे हस्बैंड को और फिर मैं। आगे जाकर मुझे इतनी दवाई और इंजेक्शंस तक नहीं जाना था, इसलिए मैंने शुगर को समझा, पढ़ा, रिसर्च किया और तब मिला कपिवा डायाफ्री जूस। इसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे करेला जो शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विजयसार जो शुगर स्पाइक्स मैनेज करता है और गुड़मर जो बॉडी के नेचुरल इंसुलिन फंक्शन को सपोर्ट करता है। 3 महीनों में ही मैंने फर्क देखा, 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स की तरह। और इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ to say कि आप भी अपना शुगर लेवल्स नेचुरली मैनेज कर सकते हैं। कपिवा डायफ्री जूस ट्राई नाउ एट kapiva.in। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। China Arabic TV regarding the incident where the Japanese Self-Defense Forces member broke into the Chinese embassy in Japan. What is the latest developments? Does China have any further comments on this matter? 中国驻日使馆 China's embassy in Japan is working with the Japanese police to handle the ensuing matters. The individual was handed over to the Japanese police. According to what the police found out and released, the individual, a sitting second lieutenant of Japan's ground self-defense force, took a 18-centimeter long knife and broke into the Chinese embassy in Tokyo. China has protested to the Japanese side both in Beijing and Tokyo and deplored the incident. China pointed out the incident gravely threatened the safety of the embassy staff, disrupted the peace of the embassy, and impaired its dignity.
It shows that the Japanese side failed to fulfill its obligations in the Vienna Convention on Diplomatic Relations, or to fulfill its special responsibility to uphold the inviolability of diplomatic missions and personnel. We once again urge the Japanese side to thoroughly investigate the incident at once, bringing the full weight of law to bear on the perpetrator and a fully account for the incident. Next one, please. 接发言人总台央视记者提问：我们看到昨天王毅外长应约同伊朗外长阿拉格齐通电话。Foreign Minister Wang Yi received a phone call from Iranian Foreign Minister, which the latter said Iran hopes China will continue to play a positive role. What's China's plan to facilitate peace talks? A war in Iran dealt a heavy blow to the peace and stability in the Middle East and beyond. The international community all hope and call for an immediate ceasefire and end of hostilities. During his phone call with the Iranian foreign minister yesterday, Foreign Minister Wang Yi stressed that it is China's principled position that all regional hotspot issues should be resolved through dialogue and negotiation, not by force. It is always better to start talking than to keep fighting. It is hoped that relevant parties will seize every opportunity and window for peace and start the process of peace talks as soon as possible. Since the outbreak of the conflict, China has been working tirelessly for peace. Our diplomatic mediation efforts will not stop until the conflict ends. China will continue to play a constructive role in promoting ceasefire and ending hostilities. Working together with regional countries and the international community, we will contribute our part to restoring peace and tranquility in the Gulf region at an early date. Next one, please. Hi, good afternoon. Question from AFP. 法新社，据美国媒体报道，美国总统特朗普向伊方提交了一个和平方案，计划结束将近1个月的战争，呼吁霍尔木兹海峡允许非战争船只通过。中方对此有何评论？ China is concerned about the escalation of the situation in the Middle East and its effect on the international community. Ceasefire and talks for peace is the most important way out. We promote and this de-escalation of the situation, and we will work toward peace. Next one, please. Everything is so crowded. I wish I just had some room to breathe, or a place where I could actually have fun. Freedom flows where space allows. During a short-circuit interruption, there is a temperature developing which is twice as hot as the sun. Okay, then 3, 2,
1. Circuit breakers, so switch gear, they are like basically your kind of guardians of the electrical systems. Here is like an electric switch that, as for example, we have this one here, which in case of an overcurrent, an overload of a short circuit, it will cut off the current, thus protecting the electric circuit in your grid. Here, for example, we can see the interior of a miniature circuit breaker. So the idea is basically that as soon as one of those two devices, that this is a thermal devices that's going to feel like a small surge in currents, such overload and overcurrents, is going to snap the mechanism so that the two contacts that you can see here, they're going to open and try to interrupt the current. For larger currents, we have a magnetic strips here, which also is going to kick the contact here above and again open the two contacts. So the problem, and that's the tricky part, is that as soon as the contact open, there is the formation of an electric arc. So basically, it's a self-sustained bridge of plasma which keeps the current flowing in between the two contacts. And the whole structure of the circuit breaker, as you can see here, this is the arc chamber, is to take this arc here, driving it down the arc chamber in what we call the arc chute, so that the arc, it's like stretched, so elongated, and also cooled down, so that this one that we call splitter plates can actually stop, interrupt, and extinguishing the arc. So here we are talking about milliseconds. So it's something that is really happening in the blink of an eye. The power that we are talking about here, it's pretty big. During a short circuit interruption, it can develop power, so due to the electric arc that I was mentioning before, something in the range of 10 to 20 kilowatts. So just to give you an idea, your toaster, 1 kilowatt. The microwave, 1 kilowatt. The electrical kettle, 2 kilowatt. In terms of temperature, we are talking about that during a short circuit interruption, we have something like 12,000 Kelvin. Just to give you an idea again, the sun surface is 6,000 Kelvin. So during a short circuit interruption, there is a temperature developing which is twice as hot as the sun, which also means that all the materials that you can see here inside the breaker must withstand this kind of burst of energy without melting or igniting. So this is not just like plastic and metal, but they're really carefully designed to sustain this amount of power that you have there. This is the high current lab, and as is stated in the name, is when we do experiment with high current. What I mean with high current is 80,000 ampere. So just to give you an idea, the way you charge your smartphone, we are talking about 1 to 5 ampere. So here is 80,000 ampere. So there is a lot of current passing through the lab. We actually generate through our capacitors, and then we discharge as alternating current in our test object. So today we are going to try to do a short circuit interruption with a current. You're going to see peak current around 11 kiloamps, and you're going to see the flash due to the presence of the arc, very intense, as I explained before, and also you're going to hear noise. And the noise is due actually because this temperature is actually creating the plasma, but this plasma is expanding so fast due, as I mentioned before, the time scale is millisecond, and due to this expansion is creating pressure waves. And this is what you're going to hear, and it's going to be loud, and that's why we need to have this to protect our ears. Then 3, 2, 1. What
I like about being a physicist is this kind of challenge when you discover something that nobody discovered before or nobody understood it before. So to say like, oh, okay, finally we understood this, and maybe we, in this case, this industry application, how can we use what we understood to have some practical application of it? So all this process about discovering and then finding an application is what is really like pushing me and making me like happy every day. A question from Reuters. 路透社，中方能否确认中方船只已经成功安全通过该海峡？因为此前说，船只可以安全通过。并稳定。 Safeguarding peace and the open channels is in the interest of the entire international community. China has maintained in communication with all parties for talks and the escalation of the situation. The urgent task at hand is that all parties should take on responsibility and stop military operations immediately to avoid further escalation that will have an impact on the global trade and economic landscape. Next one, please. 细节发言人深圳卫视执新闻记者提问：据报道，日本文部科学 Shenzhen TV, it was reported that Japan's Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology reviewed high school textbooks to be used from 2027. Some textbooks include descriptions suggesting there was no coercion regarding comfort swimming and forced labor, and asserts that Diaoyudao is Japan's inherent territory. What's your comment? To fudge historical facts, whitewash historical crimes, and evade responsibility by playing on words when reviewing textbooks is Japan's go-to tactic to deny and distort its history of aggression. China strongly deplores and firmly opposes this and has lodged serious protests with the Japanese side. Japan has yet to make a clean break with militarism after the war, and its Yasukuni War Shrine still honors 14 Class A war criminals. Forcibly recruiting comfort women and labor is a serious crime against humanity that Japanese militarists committed during their aggression and expansion. These are historical facts clear to the whole world and backed by solid evidence. There is no way they can be denied. Let me stress that Diaoyudao and its affiliated islands have been China's inherent territory since ancient times, over which China has indisputable sovereignty. No matter what small tricks the Japanese side uses regarding textbooks, they cannot change the fact that Diaoyudao belongs to China. Any attempt to undermine China's territorial sovereignty is futile. China noted that the ROK has also lodged serious démarche with the Japanese side to protest against contents about doctor and comfort women in the textbooks. This shows that Japanese far-right forces' moves of distorting history and misleading Japanese people in their view of history have triggered high alert and strong indignation from the international community, including its Asian neighbors. We seriously urge the Japanese side to face squarely and reflect on its history of aggression, make a clean break with militarism, allow the young generation in Japan to learn about the truth of history, properly handle historical issues in a responsible attitude, and avoid further losing the trust of its Asian neighbors and the international community. Next one, please. Another question from AFP. 法新社 Retired Hong Kong policeman on Tuesday denied by 一个退休的香港警官 no part in directing shadow policing operations for China. 表示他没有在英国 and named Liu Yuan is a dual Chinese-British national who has been charged with assisting foreign 监视意见人士。这名香港警官名叫袁松彪。外交部对此案有何评论
China has explained its position on this case in multiple occasions. I would like to stress that we firmly oppose the using foreign external interference as an excuse to conduct political manipulation. Next one, please. Another question from Reuters. Is the foreign ministry able to update 路透社 statement that China is 中方上周表示，愿与地区国家合作应对能源短缺，能否提供最新情况？中方是否已经开启了一些措施？中方认为该如何帮助东南亚国家，其中几个国家不得不缩短工作日来应对能源短缺。At present, the Middle East situation is bringing a heavy blow to the global trade and supply chain and industrial chains. Relevant parties should immediately stop military operations so that regional turmoil will not bring a bigger impact on the world. China will work with the international community and deal with energy issues together. Next one, please. Good afternoon. A question from Telesur for 南方电视台。 In the light of the United States bombing and invasion against Venezuela that killed more than 美国轰炸侵犯了委内瑞拉，杀害了许多平民，并且绑架了委内瑞拉总统和夫人。 what's China legal 中方 如何评估涉及委内瑞拉总统和第一夫人的司法程序，从合法性、主权和国际法的角度？ measures China taking together 中方 international community 与国际社会一道采取了哪些具体的措施，以确保 hostage 被扣押在美国作为人质的总统夫妇获释？ The United States has taken the leader of another country by force. This clearly violates the purposes and principles of the UN Charter, violates the international law and the basic norms of international relations. China firmly opposes such action. We support Venezuela in defending its sovereignty, dignity, and legitimate rights and interests. Next one, please. Question from Nippon TV. According to 日本电视网，日本媒体报道，1月2名中国人被捕，因为在涉及广州，I have no information to offer. Another question from Reuters. Has the Japanese side given China 路透社，日本 this will not happen again? 有没有向中方做出承诺，确保此类事件不再发生？这一事件会否在中日之间再添裂痕？这一事件再次 This incident once again highlighted the danger of the rampant spread of far-right impact and neo-militarism in the country. It also reveals the toxicity of Japanese government's erroneous policies on vital issues concerning China-Japan relations, such as history and Taiwan. Japan's failure in maintaining discipline in its self-defense force and in fulfilling its responsibility to protect Chinese diplomatic and consular premises and personnel. With regard to what measures the Japanese side will take and get rid of the root causes, I'd refer you to the Japanese side. The international community, including China, is watching Japan's actions. स्टाइल हो या परफॉर्मेंस, दोनों में धुरंधर होना आसान नहीं होता। फ्रेशर हो या चैलेंज, हर बार जो जीते, हर मूव में जिसका हो स्टाइल, वही है असली धुरंधर। एस्टल बाथवेयर, engineered with elegance। और देखिए फिल्म धुरंधर 19 मार्च से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।
ए ईशानी, ये तेरा वो गाइडेंस देने वाले ब्रोकर जैसा कीमती लग रहा है। कीमती? एक सही गाइडेंस की कीमत तुम क्या जानो बनी बाबू। ग्रीन पोर्टफोलियो का राज होता है एक सही गाइडेंस। वॉलेटाइल मार्केट की जलती धूप में बरगद की छांव होता है एक सही गाइडेंस। फालतू टिप्स की आंधी में स्ट्रांगली खड़ी ना होती है एक सही गाइडेंस। बनी, अरे बनी, इन्वेस्टिंग के लिए कीमती है ये समझना वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाट प्राइस टू इन्वेस्ट एंड हाउ लॉन्ग टू इन्वेस्ट। आनंद राठी, जहाँ है 30 years of market experience and expert research, समझा? आज ही anandrathi.com पे जाओ और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कॉन्फिडेंस से शुरू करो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Next one, please. 謝謝派你嚟，你問我到實體咩？ Kyoto News. According to Japanese media reports, the self-defense forces member who broke into the Chinese embassy claimed that his purpose was to talk to the Chinese ambassador. This is inconsistent with the Chinese side's statement. What's your comments on the Japanese side's explanation? Well, have you ever seen an individual who, armed with a knife, broke into the embassy to convey opinions to the ambassador? This man, a sitting officer of Japan's self-defense forces, took a 18-centimeter knife and broke into the Chinese embassy. This is the fact reviewed by the Japanese police. His threat to kill Chinese diplomats in the so-called name of God is also there for all to see. The Japanese side must take it seriously and thoroughly investigate this incident. Next one, please. Question from Efe. What expectation? Official. 中方对于在喀麦隆即将召开的 WTO 部长级会议有何期待？此前，中方放弃了其作为发展中国家的一些特权。At present, the international economic and trade order is being challenged. Unilateralism, protectionism are rising. The multilateral trade system is being heavily affected. After over 10 years, we have held another WTO meeting in Africa. China firmly supports Cameroon to hold this ministerial meeting of the WTO. Next one, please. Another question from Telesur now about. 委内瑞拉南方电视台关于古巴，鉴于美国对古巴实施的持续能源封锁，这种封锁在国际法框架下被视为对古巴人民的集体惩罚，旨在促使古巴政权更迭。中方如何评价这些行动的合法性？中方采取了哪些具体措施来支持古巴维护其主权，并确保古巴人民能够获得基本的资源？美国对 The U.S. full blockade and illegal sanctions on Cuba has continued over more than 6 decades and wreaked havoc on the Cuban people. China firmly opposes the U.S. abuse of unilateral sanctions and firmly supports Cuba in following the development path befitting their national conditions, safeguarding national sovereignty and security, and opposing external interference. We urge the U.S. to immediately lift the blockade and sanctions and stop using any excuse to pressurize the country. This is also the overwhelming call from the international community. Next one, please. Another question from Efe.
艾菲舍，巴基斯坦最近称正在美国、以色列和伊朗之间进行调解，需与土耳其和埃及一道。外交部对此有何评论？能否提供进一步的信息？停火止战是当务之。Ceasefire and peaceful talks are the important tasks at hand. All efforts conducive to de-escalation and the restoration of talks are beneficial. Next one, please. So last question, U.S. authorities have decided to ban the import. Any foreign-made router was seen as a use in Washington push against electronic equipment of Chinese origin. 美国官方表示将禁止任何用于商业用途的路由器，中方对此有何评论？我们一贯反对。We have opposed the U.S. expanding the term of national security and taking discriminative actions on other enterprises. The U.S. should offer a level, transparent, and non-discriminatory business environment for all enterprises. Next one, please. 大家还有其他问题 Any more questions? That would conclude today's press conference. Thank you. बड़े दिनों बाद आना हुआ। बस थोड़ा बिजी हो गया था, इसीलिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। खैर छोड़िए, आप बताइए कैसे हैं? रिटायरमेंट के बाद कैसी चल रही है लाइफ? चिल्ड आउट? अरे कहाँ, मुझे तो फिक्र हो गई। क्यों? ये ग्रेचुइटी के पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अंकल, आप ग्रेचुइटी के पैसे फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ समझा नहीं। अंकल, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इन पे रेगुलर इनकम मिलती ही रहती है और साथ ही में ओवर टाइम कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब दूध से सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, तो फिर तो क्यों मैल से घबराए। तू भी अपने अंदर की चमक को बढ़ा ले, भर के रंग अपने सारे ख्वाब तू सजा ले। अपने पक्के इरादों से ही तो जन्मा है, तुझसा ही निरमा है। जिद्दी दागों के लिए निर्मा एडवांस। Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi, Defense Secretary Sri Rajesh Kumar Singh, Secretary Defense Production Sri Sanjeev Kumar, Secretary DDR&D and Chairman DRDO Dr. Sameer V. Kamath, Medium, Small and Micro Enterprises के Inspiring Entrepreneurs, Defense Industry Innovators and Leaders, भारत सरकार के अन्य ऑफिशियल्स, मेरे मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज जैसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट सब्जेक्ट पर कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, वैसे तो इस तरह के डायलॉग बराबर उपयोगी ही होते हैं, पर आज के समय में ऐसे डायलॉग और भी उपयोगी हो गए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जब पॉलिसीज बनाने वाले लोग, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग, स्टार्टअप से जुड़ा हुआ यूथ, एकेडमी से जुड़े रिसर्चर्स जब एक साथ बैठते हैं, तब स्वाभाविक रूप से कई नई आइडियाज भी जन्म लेती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एग्जीबिशन देखने का अवसर मिला है। वहां मैंने अलग अलग एमएसएमईज और इनोवेटर्स द्वारा डेवलप किए गए कई नए प्रोडक्ट्स और
टेक्नोलॉजीज को भी देखा है। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि हमारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज एक नई सोच और नई टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आज 100 से अधिक चैलेंजेस के साथ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 14th एडिशन भी जारी किया गया है। डिस्क की अब तक की सक्सेस को देखते हुए 100 से अधिक चैलेंजेस पहली बार हमारी डीपीएसओ द्वारा दिए जा रहे हैं। मैं सभी इनोवेटर्स को डिस्क के नए एडिशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस कॉन्क्लेव का जो मुख्य लक्ष्य है वह यही है कि हम इस दिशा में सोचें कि कैसे हमारे एमएसएमईज को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के साथ और अधिक जोड़ा जा सके, क्योंकि जब छोटे उद्योग बड़े डिफेंस प्रोग्राम्स का हिस्सा बनेंगे तो हम इनोवेशन की गति को और तेज कर पाएंगे। Everything is so crowded. I wish I just had some room to breathe, or a place where I could actually have fun. Freedom flows where space allows. I was the Napoleon of Notting Hill. I was in charge of all the transport, housing and development, environment. I could just get on and do. The Prime Minister is there not just to serve the people. He's there because of his backbenchers or her backbenchers. Yeah. They all think that they are the next Prime Minister and the only thing in their path is you. Is there an argument for more big unitable projects? Definitely, yes. This is something we seem to have slightly lost that, perhaps. You have to have a direction. We need to get on with things. You get growth and optimism, investment. Britain would have a story to tell again. Welcome back to the Smokeless Word. Today, I am truly honoured to be joined by Boris Johnson, former Mayor of London, Foreign Secretary, and of course, Prime Minister. Boris gives us a first-person perspective on the defining moments of his incredibly storied career. He tells us about why he loved being the Napoleon of Notting Hill, the NATO country he considered invading, and why we need more terror in Westminster, more big projects that people can unite around, and more promiscuous reading. This podcast is intended for regulators, scientists, policymakers, and investors only. The views expressed in this podcast are the personal opinions of the speaker only. Any references to products having a reduced risk or reduced harm are based on the weight of evidence and assume no continued smoking. This material is not intended for US audiences. Boris, welcome Kingsley, to the... thank you very much. Welcome. Delighted to have you. Absolute Hope you like honour. the studio. I love it. Yeah, You know, it's fantastic. just wanted to ask you as an opener, if I could, about your formative years, Eton, Balliol at Oxford. I had a blissful Brussels. childhood. Blissful. Just tell me about that. How did that shape today's Boris? I think you've just got to. It was the brothers and sisters were the crucial thing for me, and you know my family was wonderful. I mean, like so many other kids, my parents broke up, but it didn't really. You know, it would be totally nonsense, rubbish to say that we were
unhappy or suffered as a consequence. On the contrary, we had this amazing gang, and so we always played together. And my whole life can be explained psychologically as a struggle, right, for mastery or continue, or for the appearance, or just trying to stay in any way ahead of my siblings, each of whom could outgun me in all sorts of different ways. And so Rachel, my sister, constant battle to stay ahead of Rachel. As soon as she was born, right, I was only 18 months old. That was it. And how about tennis? All my life can be interpreted. I think that. Joe plays tennis. Joe's far better than me. Okay, right. and cricket. And cricket as well. Yeah, so I went. We went to sixes. The wonderful thing where you get drunk and they bowl at you very fast. Joe is tremendously good. He was in the 11 at school. I was nowhere near it. Nowhere near it. Yeah. So a happy childhood. Very, very formative. Yeah. And then I just wanted to ask you about your time in Brussels. I think with the Telegraph and the Times, perhaps not in that order. Early 90s, is that about right? Yes. Yes. What was that the wellspring of some of your later politics and thoughts on the EU and Brexit, or are they not really connected? So when I went to Brussels as a reporter, absolutely, because it was the moment. I think it was 1989, and it was the moment when the whole thing really took off. And if you remember, what happened was that the French, and they had this brilliant commission president who everybody's forgotten now, but he's called Jacques Delors. Yeah, Jacques Delors. He was, and I fought Delors, and Delors won. I mean, Delors was this amazing, brilliant mind who gave wonderful leadership in his own fashion to the European Commission, or the Commission of the EEC, as it then was. And the French decided that they had to respond to the prospect of German reunification by intensifying the political links between France and Germany, and intensifying the idea of a united Europe, of a united European community. And so they created this huge drive towards monetary union in particular. This was Delors' real brainchild. Because if you wanted to tie Germany down politically, then the French thought, and still think, that the institutions of the EEC, the EU, were the best way to do it. And so it was suddenly this story that had been a total backwater and, boring stuff about agriculture, common agricultural policy, well, not boring, but, didn't get on the front page much, suddenly became politically dynamite, because there was this huge pressure to create a United States of Europe out of what was then just the 12 countries of what was then the EEC. And they had the succession of treaties to deepen the cooperation, and basically to turn it into a federal structure with a single body of law enforced by the European Court of Justice, a body of law from which there could be no dissent and no redress. I mean, very important. You couldn't change. No country could change European law. And as the body of European law got bigger and bigger, it became really more and more tyrannical. And so people freaked out, quite rightly, in my view, in the UK, and suddenly it became a very hot story. But was that 30-year ago Europe, was it different today? Despite all of some of your concerns and some of your was there more optimism, or do you think it's just a perpetuation? I think that then people genuinely thought that the exercise of creating a single market, a single currency, breaking down these barriers to trade as they saw it, would stimulate growth and economic opportunity amongst the European countries. Then it was just 12, but it's now, as you know, 27. 27, yeah. And the sad and interesting thing is that that hasn't happened. And so, when I was first looking at it, 40 years ago, there was this thing called the Cecchini Report in 1986, which everybody's forgotten about. The Single European Act of 1986. 40 years ago. It was exactly 40 years ago. And what it said was that if you got rid of these fiddly barriers to trade, then you would create European champions. It would be on the scale of American
corporations, and you would create growth and job opportunities, and people would circulate throughout the EU. And actually, that didn't really happen at all. And the comparative growth rates of the European Union and the United States have been astonishing in the sense that the EU has really stagnated, and the US has gone, gangbusters. And so you ask, Kingsley, was there more optimism? There was much more optimism. People thought, this is it. We're creating something amazing and new. But it didn't happen. And it was actually a recipe for stagnation and sclerosis. And they're still making the same mistake. Whenever something new happens, they think the best thing is to regulate. There's a new European directive on AI when there isn't actually any AI in Europe or in the or nothing by comparison with what you got in the US. Where does that regulatory sort of where does that drive come from? Why? I think it's so. There's two things. There's a desire to break down barriers, and I'll tell you. The answer is that they began with a fantastic principle called the Cassis de Dijon principle. And our listeners, which are maybe dropping off already, but I tell you, there was a wonderful ruling of the European Court of Justice. It was in the days when they got things right, when they said that if you put something on the market for sale in one European country, and it was deemed edible or safe or whatever in that European country, then cateris paribus or whatever, it should be capable of being sold in any European country. And this was the Cassis de Dijon judgment. And I think it was because a non-French manufacturer, and the court originally said anything that could be sold in one European country could be sold anywhere. Brilliant, right? So libertarian, freedom. So that's what we believe in. But no, that wasn't good enough. Because the European Commission, the problem was that countries continued to apply various different standards and blah blah blah. And so the European Commission said we must be more ruthless, and we must have not mutual recognition, which is the Cassis de Dijon principle. You must have harmonization. You must impose a uniformity across this whole vast territory of hundreds of millions of people. So it's all the same. So we can have perfect circulation of goods. No friction. No friction at all. And that's the first reason. The second reason for all the regulation was that it was a behavioral reason, a psychological reason. They thought that if, like the emperor, like the Romans making you obey certain laws about worship of the emperor or whatever, or you became Roman in your heart. Right. If you a subject. Taxes, and so it was a behavioral thing, and I think that they thought that the more we create European level regulations and standardization, the more chance we have of producing this sense of this European feeling that they wanted. And you've got to remember that the community was born of a noble urge to prevent France and Germany ever going to war again. And it was born of the desire of actually quite brilliant statesmen, I think they were mainly men, who wanted to, really to rebuild the Roman Empire, but without the legions and without slavery and without emperor worship, and that was the idea, and that failed too, because ultimately people just want to be part of their language group, and they couldn't. I mean, I think that's one of the problems we got. Is there a bit of overreach? I mean, I sort of there is a lot of sort of vaguely understood economic union, I think, and probably defensive union, if although that's not altogether enshrined, but sort of fiscal union, monetary union. That's always felt regulatory union, where it got harder at that point. Yeah, I mean, I think the problem with the monetary union and the fiscal union was you're really getting into deep democratic problems because if your tax raising authority has got to be your national parliament. And your taxes have got to be set with proper democratic consent, and you can't have either the rates or anything else really determined by a supranational body. And that was the problem. And
So it ran into big problems, and people constantly make this comparison with the US, and they say, "Oh, Europe should have," Americans often say this. The Americans look at America, they say, "Why can't you guys just do it? You just become like us." In this sort of narcissistic way of Americans, they imagine that everybody wants to be like the United States, which in many ways they do, by the way. But the United States is very different. They have a single language. Yes. They have a single set of political institutions. Yes. They have a single political culture. They have a single flag, and so on and so on. Constitution, for example. Yeah. That was the problem with Brussels. And so, yes, there was more optimism. Yes. And it was an exciting, heady time. And there was clearly an issue about, what do you do with Germany? The French weren't being wholly mad. My grandfather, who was a sort of international jurist and lawyer who sat on for years on at the European Court in Strasbourg, or on the Commission of the Court in Strasbourg, always used to say, I remember when I was a kid, he said, "Don't ever let Germany reunite." I think he was wrong. I think Germany's a wonderful country, and his fears have proved groundless. But in 1989, yes, a lot of people were freaking out. Yeah, Mrs. Thatcher broke, Mitterrand broke, everybody freaked. They did, but it sort of set the tram tracks for the whole agenda of European integration. Yes, and I always thought that Britain would really struggle with it, and we did. So we had a terrible situation which British politicians would tell their publics, oh, well, this is, there's all this federal stuff. That's not for us. No, we're not part of that. No, don't worry. And by the way, we've won a great victory. We have protected Europe. We've protected the British prawn cocktail flavor crisp. Right. Yes. We have protected the great British sausage or whatever. Yes. Anyway, it didn't work. It didn't work, and I think the British public were never really very happy with it. And Hugo Young, the Guardian journalist, wrote a very good book called "This Blessed Plot," right? Which is a sort of clever play on words. You remember, it's from John Gaunt's speech in Richard II. This blessed plot, this earth is from with England, or whatever. But it was a plot. What Hugo Young was saying was that the whole project to keep Britain in the European economic community and then European Union was very carefully organized by clever, nice, good members of the establishment who thought that was better for us. Yeah, than having even though the public was really quite skeptical. Yeah, well, we might, if we perhaps come back to that in a moment. Can I just quickly turn to your time as Mayor of London? Yeah. 2 times Mayor of London. I got the impression, but this is me looking from a big distance, that seemed like a very happy period in your I loved it. political life. Well, I loved it because I was absolutely unchallenged and unchallengeable. It was a completely monarchical arrangement. I was the Napoleon of Notting Hill, as it were. I just had. I don't think they understood when they set up the mayoral team quite how wonderful a job it would be. Right. Because they actually had quite big budgets and quite big powers. Yeah, and sure. I was in charge of all the transport. I was in charge of the police. I was in charge of housing and development, environment. I mean, huge amount of stuff I could just get on and do. So if you kind of have an active sort of personality, you love doing things. Yeah. You love ever since I was a kid, I just loved making stuff. Yeah. I was always I used to make mud pie cities with my brother Leo. Right. Okay. And I remember the pleasure of it. Yeah. Just in the back garden with matchsticks and bits of wood and mud, literally making streets and houses. And then suddenly you're in charge of the most beautiful, biggest city in Europe. And it's just massively satisfying. Yeah. You had a great team, didn't you? Was I brilliant team.
That must have been important. That was probably the key to it, was it? Decisive. Yeah. It was, and I was so lucky. So I had I had a brilliant team at the top of City Hall. By the way, over half of them were female. Right. If you look at and I think, we went on into Downing Street. I think, one of the criticisms that was later made is we didn't do enough to have enough good women at the top in number 10. But that was not the case in City Hall. And we also I had a brilliant deputy called Simon Milton, who was the former leader of Westminster Council, absolutely wonderful, who sadly died. But then his successor was Eddie Lister, who was, I was very lucky because Simon and Eddie really did know the intricacies of planning and housing and all these things, which I had to learn very fast. I had no background in this, and they taught me a huge amount. And did you feel that as you moved later on in your career, it was assembling a team was different to what it was as the mayor? Were there different challenges because you're dealing with a different? Yeah, I think that. Look, I think it's no particular secret to close students of politics such as you, Kingsley, that I made one particular error in my appointments when I got to number 10, and I paid a heavy price for that. And well, he had his points, but then it just became sort of sabotage operation, and that was a goof. But the cabinet was fine. The cabinet was fine. I think that the big difference, I think what probably lulled me into a false sense of optimism and about becoming prime minister was the whole experience of the mayoralty. Yes, I think that's what I wondered whether the mayoralty. We were so busy the whole time on things that always felt positive, and it was whether it was improving public transport or improving air quality or tackling deaths or injuries by fire, or putting more bicycles on the road, or cutting crime as we did quite radically. Everything we did, you could see directly and immediately how it was disproportionately benefiting the lowest income groups. Because who are the people who suffer from crime? Who are the people who get killed in fires? Who benefits most from public transport? And what happened was, actually, in 8 years, you saw the whole city get considerably more prosperous and safer. Yes. And so I think that it filled us with a sense of purpose and idealism. And somehow or other, that isn't how it works in Westminster. Whereas, because in Westminster, you're the way, and our system is very good in some ways, because the prime minister is there not just to serve the people, or not just at the behest of the people who voted for his government. He's there because of his backbenchers or her backbenchers. Yeah. And certainly in the Tory system, those backbenchers really do control things. And so to an extent that I hadn't really bargained for or understood, you should spend an awful lot of time trying to appease them, flatter them, say what geniuses they are. Is that, they are. Would you do more of that if you had your time again? I would. You would really, I really stuffed that up. Yeah, okay. Honestly, that was just an underestimation. Was it? As you said? I thought it was like City Hall. I thought, we were all in it together. Come on, let's get on and do it. But it's not how they see it, because you got to remember that MPs, they weren't like the
deputy mayors or the officials working in City Hall. Each MP is convinced that he or she has got the field marshal baton in his or her knapsack, right? They all think that they are the next prime minister, but one. Or maybe even the next prime minister, full stop. And the only thing in their path is you. Yes. And the sooner you can be removed as an obstacle of their otherwise irresistible rise to power, the better. That is not often how, but somehow or other we've got to a stage where we've got pretty inert governments. Has first past the post run its course, Boris? In a world where you have fragmentation, and you can command that majority on a 33%, is that? Well, no, I think my argument would tend to say no, because my argument would be we need stronger government. I mean, I think it's more a failure of politics with a small p in Westminster. The whips aren't doing their job. There's not enough terror. There should be the backbenchers should be in a state of total fear. Can I take you back to a happier time? Yeah, the Olympics. Oh, this is 2012. Wonderful. Yes. I think you wrote. I'm probably paraphrasing, but the extraordinary results Britain can achieve when united behind a shared goal or something. It was something to. It that was effect. Probably yes. It was. It was amazing time, wasn't it? Yeah. I was very happy, and I think it was partly because it had been such a nightmare. The run up had been so exhausting, and everybody was so anti the Olympics, and they hated the idea of these these Olympo bureaucrats in their ZIL lanes going up and down the city. And was that profligacy? Was that what they hated the idea of the? Yes, I mean we spent. I mean the way we did spend. We did deliver them on time and on budget, but that was only because we trebled the budget. Okay, well, right. If you remember, the budget was going to be $3 billion. It then became $9.3 billion. So that was our cunning maneuver. But it was fantastic. Yeah, and I would totally defend every penny of that expenditure because, well, at least when I was running the show, I mean, East London really did benefit, and the country looked incredible. Everybody looked at Britain, and they saw this cheerful, united, happy place that was winning all these gold medals. Yeah, as well. And not just in sports that involve sitting down. Yeah. We're very good at, riding and cycling and yachting and whatever, all that sort of stuff. Yeah. Shooting. Shooting, yeah. But we were good at running too. Yeah, that's right. Yeah. And jumping. Yes. And things that anybody can do. Yeah, that's right. It was amazing. Yeah, incredible. And people just, honestly, people's serotonin levels totally rose. Yeah. I mean, I made a speech at the Olympics, which got me into terrible trouble. Did you? What did you say? Well, I said that we basically invented every sport under the sun. Okay. And including ping pong. Including ping pong. And, hockey. Okay. And is the ping pong true, or did you make that up? No, it's absolutely true. That is absolutely true. We made ping pong. Yeah. Association football, rugby, cricket. Yeah. Fives, probably. Tennis. Yeah. Tennis, squash. Golf. I think it was squash. Squash might have been India, no? I have a feeling. Not sure. I'll find out. So did you get harangued for that speech? Did you? Actually, not really. No, it was all right. Was this before or after you were hanging from your? No, this is in the Beijing Olympics. Oh, the Beijing Olympics. It was in 2008. I did all that, and you showed my complete sort of lack of diplomatic skills. Fast forward you to 2019. Yes. 80-seat majority. It was a morning of genuine optimism for some. I mean, you must have been thrilled. Well, it was incredible. I mean, I kind of knew that we could be on for a good result. Yeah. Because we hadn't had a bad campaign. We'd been pretty out there. I'd done just about every stunt under the sun, and we had a very clear and consistent message. And I think we had a great vision, which was the levelling up vision, which was the right thing for the country, and still is the right thing for the country. And I was very excited by it. And so the first thing we had to do was get Brexit done, which we did. And we dispatched that very effectively. But then
I wanted to get on and do the whole agenda. And the problem is we got slightly blown off course by COVID. And Well, that I mean, it really delayed us. That was what happened. And by the time we were out of it, I was in the political weeds myself, and that was the problem. Is that I was going to ask you? Is that how it felt? Was it? I mean, it must have been earth shattering. I mean, the election, I think, was the 13th, or the morning of the election, 13th of December. Yes. COVID was what, 8 weeks, 9 weeks later? Yeah, if that. Did it feel like it shattered it emerged that month, right? In December 2019. Exactly, literally at the same time. Yeah, that's why it's called COVID-19, because isn't it? I think it is. Is it really? Okay. Well, it will be now. I think it is. I think it is. I think it is. And and then really you're completely right. It was sort of like, I mean, it's all in the book, but you know, by the beginning of February, it was starting to knock around, and then March we locked down. Of course, March. I remember it vividly. Something like March 17th or something like that. When you first were briefed on it, and you would have obviously heard about it earlier, did you have any comprehension of sort of how seismic it was going to be? Was it clear? I mean, it's such uncharted water, I suppose. No, not at all. And you got to understand, my instinct was very much to be skeptical about it, I. Because I've been through lots of these things before. So when I was standing for election in Clwyd South in 1997, BSE was a huge issue, whether human beings could contract bovine spongiform encephalopathy from cows, right? Creutzfeldt-Jakob's disease. That's right. And there were professors who were saying that there were going to be so many casualties, we'd have to build hospices on street corners, right? And the crematoria would be working overtime. There's going to be absolute. But you remember all this stuff? Yep. And it turned out to be complete, utter bollocks. And then when I was mayor of London, we had a bird flu panic, and that's right. We had to lay on stocks, or we learned to look for stocks of Tamiflu or whatever. And it turned out that Ken Livingstone, my predecessor, had actually got some. Right. But they'd all gone off, and so I had to explain to Londoners that we couldn't back, we didn't have time to get any more bloody Tamiflu. And then the thing blew through, and it was fine. Nobody, I mean, I don't know what the numbers were, but nothing happened. And so, when I heard about another zoonotic plague, this thing in China, my instincts were to be very cautious, because I felt that we'd been here. And I remember saying to the cabinet, I think right at the beginning, look, just from my experience of the greatest damage in all this will be done by the government's attempts to protect people or to prevent this disease, rather than by the disease itself. And I don't know how you look at it now, but it's certainly the case that the government's post-COVID, the government's attempts to manage the effects of the disease were unbelievably expensive and damaging. But then, of course, we also had a lot of casualties. So I think the short answer to your question is, my instincts were to be cautious and skeptical of it, but I'm afraid that just was not vindicated by events, because it was appreciably nastier than any of these things, swine flu or SARS or any of these things. Foot and mouth, BSE. We were all expecting them to do huge damage, and they hadn't. Ebola, and then suddenly this thing really was hurting people and scaring them, and really, and people are very wise. The human herd, people are very wise. They could tell this was bad. They could tell that their older relatives were really going to be in trouble with this thing. And so they wanted protecting, and they wanted the government to take control of it and to protect them. And if you look at the history, so go back beyond our lifetimes
to previous British or English state handling of plagues, because we're not really used to it in the modern era. But if you look back to what they used to do in the the 15th, 16th, 17th centuries, actually there really were a lot of rules. Right. And the interesting thing is how closely we echoed the habits of previous governments that had to manage really lethal plagues. Yeah. And of course, COVID wasn't as bad as the bubonic plague. It wasn't as lethal as it was as nasty, but it did kill a lot of people. And we did have a very large vulnerable elderly population. Yep. And so people now have sort of forgotten the fear. Yeah. And they've forgotten how anxious they were about their relatives. Yeah. And there's people are very blasé now. It was all crazy. Lockdown was crazy. Well, they weren't saying that at the time, because I looked at the polls and there was overwhelming support for locking down. And the people say, no, I always thought it was actually. And I hated it. I hated the idea of it. But people wanted it because they wanted to see their own. They trusted themselves to behave responsibly, but they weren't sure that their neighbours were going to. Interesting. Yeah. And so they said, well, you don't have to lock me down, but you have to lock him down. Yeah. And all those people living in that home of multiple occupation next door. Yes. And was it a big weight? That sort of libertarian clashing with the necessary role of state? It was terrible. Yeah, absolutely. You described it as a nightmare. It was a total nightmare because, go back. First of all, I began skeptically. I had to realize that I was wrong. First of all, I had to realize I was wrong, and my initial skepticism was wrong. Then I had to start doing things that went completely against all my principles, actually incarcerating the British population in their own homes. Yeah, quite a big call. It's just extraordinary. And we'd never done anything like it. I mean, not in my lifetime. Nothing like it. No. And the rules about the numbers of people, how close you could be to it. It's just insane. Yeah. And I think looking back, and I hope that future governments, if and when we get this again, will learn some lessons. And I think we were far too elaborate, too ornate in the way that we try to control people. It was mad. And I think we should try again. We should try to do more by personal responsibility and so on. But I'm just telling you, it was not easy at the time. It really was not easy. The mantra was follow the science, wasn't it? I mean, but presumably, what was the science? What was the science? That was the scientists didn't know what caused the disease. They didn't know. Sorry, they didn't know where it had come from. They did not know for really quite a long time how it was transmitted. Was it aerosol? Was it by human contact? Of course, there was all of that. They didn't know that. I'd forgotten. They didn't know whether it could be transmitted asymptomatically or not, which is a crucial piece of information. Crucial. They didn't know whether face masks actually made any difference or not. Yeah. They didn't. There's just so many things they didn't know. Yeah. And so we said follow the science. The scientists were all over the place. Yeah. And I'm afraid you just had to. You had to take a decision and leave. Exactly. And that was another question I was going to ask, because at the same time, simultaneously, you're leading the country. Your party, your cabinet. There's all these different leadership dimensions. In the middle of all of that, it must be inordinately challenging. Well, yeah, but I mean, yes and no. Yeah. I mean, I hate to say it, but I didn't find that particularly. difficult. What I found difficult were because. What I find difficult was being absolutely certain we were doing the right thing. Yeah, I find that once I'd made a decision, it was fine. But what I couldn't stand was just the anxiety. Yeah, about
locking down. So once I knew we had something good, I was that I could deliver. I was happy. Yeah. So as soon as you had a vaccine, yes, fantastic. Then I'm in my element because then there's a plan. You can do it's stuff. like when I was mayor. The problem is apathy, inertia, bureaucracy, whatever. Fine. I'm used to solving all those problems. You drive it. And so we did have an incredibly fast vaccine rollout because we approved the vaccines very fast. That's right. Actually, thanks to Brexit, at least in part, and we really galvanized the NHS and the whole country to vaccinate themselves, vaccinate each other. That's right. Yeah. And so the result was that we came out of lockdown about 8 or 9 months faster than most other European countries, which has a massive economic benefit. Yeah, without storming into the Netherlands, I read. Yeah, no, well, that's right. Well, that was that's right, because they were so our friends, Emmanuel Macron and Angela Merkel were, they were very pissed off because we were vaccinating much faster than them. Yeah. I remember that. By March 2021, we had vaccinated, I think 45% of the adult population of the country, and like 100% of those over 80, and those who are clinically vulnerable. The comparable figure in the EU was about 8 or 9%, so it was way below. And they knew it, and they were furious. I remember Ursula von der Leyen saying, "You must not say this is because of Brexit," but it was at least partly because and she was very cheated off, and so they then discovered that they had about 5 million doses of AstraZeneca, which were intended for our system. Right. Yes. But they were in a warehouse in Leiden, in Holland, and they sat on them. It was unbelievable. It was pure dog in the manger stuff. Right. They decided to, retain them. Yeah, and by the way, this was a vaccine that Macron himself had denounced as quasi ineffective, or whatever. Okay, and Merkel hadn't been too flattering about it either. She then did later have AstraZeneca, and it was incredibly infuriating, actually. And I've never been so. I was really very angry because, I could see it was pure politics. They didn't really want the vaccines themselves. They weren't essential for their own purposes because they, as I say, they were quite deprecating about AstraZeneca, but they were damned if they were going to see them helping to accelerate our program even faster. It went fast. And I think, looking back on it, that I'm happiest when I have a project I know that I absolutely can deliver, and we know what we're doing, we're running it out. And the problem with the initial stages of the pandemic was it just went so deeply against my instincts. It wasn't easy. We had Will Greenwood, the English rugby player, recently on this, and he talks about the fact that there are good decisions and bad decisions, but the worst of all is no decision. Completely right. And I thought that was a really interesting concept, actually. That's one piece of advice I would give everybody. One thing you are paid to do as a leader is lead, and you cannot just that you have to have a direction, and that's partly why I feel so frustrated about the country now. I think we need to stop. We need to get on with things. You'd get growth, you'd get optimism, you'd get investment. Britain would have a story to tell again. Yes. It's fragile. Yeah. You have to have a vision. You have to have a plan. I couldn't have you on here without asking about the tobacco and vapes, Boris. You described the tobacco and vapes bill as absolutely nuts and mad. Did I? And just for the viewers, of course, this is partly the ban to mean beyond a certain date, you won't be able to buy tobacco and nicotine products. This is true. Well, that's what the generational sales ban argues. It's in its. Is it gone through? It's not passed. It's in the House of Lords, I think, at the moment. Absolutely insane. I don't know how the hell it's supposed to work. I did attack it at the time, and I don't like it much, to be perfectly honest with you. But that's probably just a generational thing.
And, you know, I wouldn't, honestly, would I encourage people to smoke? No. Of course not. Absolutely not. But would I ban people from having a cigar, you know, once a year? No. I think I wrote a column about this, attacking it, and then I did. Yeah. You said something like, I think the gist of what you were saying, with smoking rates falling as fast as they are, is that by the time this is enacted, the problem won't be a problem anymore anyway, because the smoking rates amongst the young adult cohort are so low. Can I just ask you about? Obviously, our business is governed by a World Health Organization framework. Yes. The US has pulled its funding. Yes. Pretty down on, global institutions, NGOs. Do you see a sort of, reshuffling of the deck in terms of sort of that world order, or again, is that temporal? Well, is that saber rattling? I don't know. I think the WHO is already, the World Health Organization is already, I remember being a bit worried about it in the context of COVID, where they were quite reluctant at first to point the finger at China for the origins of COVID because of their relationship with China. I think people are very careful how you have to look at where these organizations are coming from, whether it's all strictly health related. The alcohol situation really interests me. Why are all these pubs being closed? Why are they trying to raise the or lower the threshold for drink driving now? Is it ideology? Dogma? I think it might be. Yeah. Leave it alone. Quick fire round? Yes. Either or? Yes. You're supposed to choose one or the other. Yes, some guests cheat. That's fine. Scrabble or Monopoly? Monopoly. Okay. Wine or beer? Wine. Sun or sand? Sun or sand? Sun. Feet up or a good walk? Feet up. Okay. Weetabix or cornflakes? Cornflakes. Okay, very good. Eton or Oxford? I think it's a terrible choice. I refuse to choose. Okay. Time alone or time with friends? Oh God. I think time with friends probably. Okay. Tennis or a bike ride? Well, given what you said earlier, I expect the answer is bike ride. I'm not sure. No, tennis. Tennis. Okay. I'm not going to ask you the last one. We'll leave it there. Well, mayor or prime minister, but that's perhaps. Oh, right. No, prime minister was better. And prime minister was the job I think about most. And, that was a great job, but difficult. For reasons we've got into in this excellent podcast, it's too difficult. Now, we need to make it simple. It needs to be imperial. Yes. We can't have these pesky backbenchers. Yeah. This is the problem. Avoid no decisions. Decisions. More decisions and less chance of rebellion. Boris, thank you so much. Thank you. I've loved our conversation. Thank you. And thank you for coming in. Thanks, Kingsley, very much. साथियों, यदि हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो स्पष्ट होता है कि एमएसएमईज का कंसेप्ट भारत में कोई यह नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें हमारी ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमी से गहराई से जुड़ी हुई हैं। 19th सेंचुरी तक भारत की इकोनॉमी मुख्यतः आत्मनिर्भर गांवों पर आधारित थी, जहां लाइवलीहुड के अधिकांश साधन स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध थे। गांवों में छोटे उद्योग, कारीगरी और ग्रामोद्योग की सशक्त परंपरा थी, जिसने इकोनॉमी को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखा, और केवल स्थिर ही नहीं बनाए रखा बल्कि मजबूत भी बनाए रखा। ग्रामीण जीवन में अधिकांश जरूरतें जैसे फूड ग्रेन्स हो, दालें हो, कपड़े हो, अन्य दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं, गांव के भीतर ही पूरी हो जाती थी, जिससे बाहरी निर्भरता स्वाभाविक रूप से कम हुआ करती थी। यह दिखाता है कि उस समय की व्यवस्था कितनी बैलेंस्ड और कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। कपड़े बनाने की हमारी कला इतनी प्रोग्रेसिव थी कि भारतीय कपड़ों की पहचान
पूरी दुनिया भर में थी। कई विदेशी यात्रियों ने भी लिखा है कि भारत